Hi everybody, welcome back to another exciting session of Green Trades. Today we are going to discuss about the analysis of Nifty and Bank Nifty for the upcoming week. जैसा हम सब जानते हैं कि लास्ट वीक में बैंक निफ्टी ने बहुत ही पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मूव दिया है, बट क्या वो मोमेंटम बैंक निफ्टी या निफ्टी नेक्स्ट वीक में कंटिन्यू करेगा और इज इट entirely going to be a new start? So we'll try to analyze the markets and see what is a good position that we can take for the upcoming week. So without any further ado, let's get started. So जैसा कि हम सब जानते हैं guys, this was the most beautiful move जो एक unidirectional option buyer हमेशा पसंद करता है. If you would have bought call in Bank Nifty, I think your weekend would have been awesome. But on the other side, there were many people who as well got trapped. अगर कोई पुट लेके चल रहा होगा and if he has got over positioned himself और बहुत ज़्यादा quantity लेके गया है, then definitely he has taken a big hit. Secondly, if you must have just followed a traditional non-directional setups like straddles और triangles, उसमें भी आपको बहुत सारा hit देखने को मिलेगा. The only people in non-directional, those who would have survived, would be people who have adjusted their position with the market. That too, they would have minimized their losses. I hardly think any non-directional trader would have gone into profits. Now we will see what market can do for the upcoming week. So first we'll start with Nifty. तो अगर आप देखोगे Nifty में, it is actually created a beautiful series of an upward trend. पहले मैं आपको दिखाऊंगा from where the downward trend has started. The market came down here, started to move up and started creating higher highs and higher lows. I'll change the color for you so that it is properly visible. Let me make it blue. Okay. So अगर आप देखोगे, this was a previous, change it again. This, if you see, I'll just mark it for you again. Just a second, guys. If you see this particular zone, this was a previous swing lower high of the previous rally, which is broken here. और यहाँ से मार्केट ने हायर हाइज का एक ट्रेंड कंटिन्यू किया है. So for me, if the market comes back here in this zone, because ये जो resistance था, now it has been converted into support, so there are high chances that market would test this level and shoot up. So if market comes here and breaks this previous high, you can definitely go for long. अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट होके सीरीज ऑफ लोअर हाइज एंड लोअर लोज फॉर्म करता है, देन it's advisable to short on rises. Okay, otherwise the market sentiments look pretty positive, तो आप buy on dips कर सकते हो definitely till the time this particular support is not broken. I'll just mark it for you. Till the time this particular support is not broken, do not try to enter the market. The level is somewhere around 17,415. तो 17,400 level अगर नीचे से ब्रेकआउट देता है मार्केट, देन ओनली लुक आउट फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज. टिल देन द मार्केट इज क्वाइट बुलिश और बुलिश टू साइडवेज. सो बिफोर दैट डोंट ट्राई टू एंटर. अगर आप नॉन डायरेक्शनल प्ले करना चाहोगे, देन फॉर मी दिस समवेयर अराउंड 17,700 एंड 17,400 का रेंज विल is what I'll prefer for next week. But there are high chances of me shorting puts rather than shorting calls because market एक directional move already start कर दिया है. So it's better if you are an option seller, an advisable move would be to sell puts. If you are an option buyer, then it's advisable to go with buying of calls and see to it that you don't pay a premium for deep out of the money calls or puts. So what I mean by that is try to go for at the money or maximum 50 to 100 points out of the money. बहुत deep out of the money लेके मत जाइएगा क्योंकि we never know how aggressive this move can continue. So I'll suggest you stick to
at the money premiums and try to take the benefits of the moves that are coming in. But at the same time your risk management is also important. तो आपके रिस्क के हिसाब से पोजीशन साइजिंग लीजिएगा एंड देन कीप अ प्रॉपर डिसिप्लिन स्टॉप लॉस, बिकॉज इफ इट इज नॉट देयर, चाहे कितना भी मार्केट आपको अच्छा मूव दे दे, आप 4 दिन में कमाओगे, द फिफ्थ डे यू आर गोना लूज इट एंटायरली बिकॉज यू डू नॉट हैव अ प्रॉपर set of exit rules. So please keep a proper disciplined stop loss and then only trade. Now coming to Bank Nifty, if you see, this is something that is a wish of every trend trader. So ये जो move early morning जिन्होंने पोजीशन बनाया होगा, आई थिंक दे वुड हैव हैड द वेरी सक्सेसफुल डे ऑफ देयर लाइव्स. और बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे प्रॉफिट्स के स्क्रीनशॉट्स डाले हैं. आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी दैट पीपल आर मेकिंग मनी, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू नो दैट this moves will not come every day. So you have to be cautious enough to take a proper decision with the momentum of the market. क्योंकि बैंक निफ्टी ऐसी चीज है जिसमें एक छोटी सी भी न्यूज आ गई, then you know how wild swings bank nifty gives. So if you see from my perspective, first and foremost I can see this to be a strong support which is of 35,000 odd levels. 35,000 yes, 34,983 odd levels. So 35,000 आप पकड़ के चलिएगा. This is the first level of support. Secondly, what market has done is market has created a small resistance which is broken, yet to be tested. Okay, तो ये यहाँ पर जो सेलर्स ट्रैप हुए हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर पोजीशन एग्जिट करेंगे एंड इवेंचुअली दे विल टर्न आउट टू बी बायर्स. सो इधर शॉर्ट कवरिंग आप देख सकते हो, क्योंकि बिकॉज दिस पीपल who have not exited are still stuck up because of this rally. So remember that. The third move is there was another resistance here, but आप अगर देखोगे इस resistance move का ओरिजिनल पॉइंट यहाँ पे है, तो there were sellers who would have actually booked the profits here and then exited. तो यहाँ पर ये सेलर्स भी ट्रैप हुए हैं. सो आई स्ट्रांगली फील व्हेन द मार्केट कम्स हियर एंड टेस्ट्स दिस लेवल ऑफ 36,600 ऑड लेवल्स, दिस सेलर्स विल ट्राई टू एग्जिट देयर पोजीशन, इवेंचुअली टर्निंग आउट एज बायर्स. तो यहाँ पर ये लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल डिसाइड करेगा बैंक निफ्टी के ट्रेंड के लिए. सो इफ मार्केट रिवर्सेस एंड ब्रेक्स दिस लेवल, be sure that market is going to fall strongly because this must be a fake breakout. But अगर market यहाँ पर hold करता है और एक strong momentum upside में देना चालू करता है, then you can see something like this. Because यहाँ पर positions जिसने short बनाया है वो exit करेगा and there will be definitely a fresh buying. Considering this to be a support level, buying will come in. But if you see the overall trend, Bank Nifty was creating a lower highs and lower lows, which eventually was broken, and Bank Nifty has also started to create a higher highs. तो ये जो मूव है वो बहुत सपोर्ट करने के चांसेस ऑन अ हायर साइड है. तो माय एडवाइस अगेन वुड बी, डोंट ट्राई टू बाय समवेयर हियर, वेट फॉर मार्केट टू रिट्रेस एट 36,600 ऑड लेवल्स, और वहां पर आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके अराउंड 50-55 पॉइंट्स का यू कैन गो विद बाइंग ऑफ अ कॉल, और इफ यू आर इन ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स यू कैन लुक आउट फॉर फ्यूचर्स बाइंग विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस एंड देन यू कैन कैप्चर द रैली. अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है देन डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू क्रिएट समथिंग लाइक दिस, एंड दिस मूव विल बी वेरी शार्प. बिकॉज ये मूव सबसे ज्यादा शार्प होगा बिकॉज ये जो बायर्स हैं, the buyers who are here, इनको अगर ट्रैप करना है ऑपरेटर को, तो दिस एग्रेसिव मूव विल बी मच मोर फास्टर देन दिस रैली. तो प्लीज बी कॉशियस. अगर आपको ट्रेड लेना है, दिस इज अ गुड पॉइंट टू गो फॉर 36,600 for buying, but if the stop loss gets cut, be ready to switch your positions and move to selling, because यहाँ से एक aggressive move आपको definitely दिखेगा. But there are high chances of move continuing because Bank Nifty
is creating a series of higher highs and higher lows. तो एक पॉजिटिव मोमेंटम है, पॉजिटिव बायस है, बट अगेन being cautious as a trader is always a key to your success journey. So proper risk management, proper position sizing लेके ही trade कीजिएगा. And all the best for the next week. I hope this video was very fruitful. And if you have not subscribed to my channel, you're definitely going to miss a lot of videos, especially informative videos like this, my views and analysis on the market. So which can actually help you to take the decision in the next trading session. So do subscribe it, do click the bell icon so that you get the notifications first, and all the best for the coming session. Have a good day. Thank you so much.